بسم الله الرحمن الرحيم. Click on the link below for the online test. The land too was abandoned. जमीन भी तर्क कर दी गई. Then he was simply abandoned. फिर इसे सीधा तर्क कर दिया गया. This was an abandoned house. ये एक लावारिस मकान था. It too had been abandoned. इसे भी तर्क कर दिया गया था. I abandoned it and framed A. मैंने इसे तर्क करके फ्रेम किया. After that we abandoned all. उसके बाद हमने सबको तर्क कर दिया. Fact is, they've abandoned me. हकीकत ये है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है. He had been abandoned to the. उन्होंने कहा कि छोड़ दिया गया था. I haven't abandoned my plans. मैंने अपने मंसूबे तर्क नहीं किए हैं. That's when I was abandoned. उस वक्त जब मुझे छोड़ दिया गया था. Wall and the abandonment emotion. वाल और तर्क करने का जज्बा. Yes, you shall love me with all abandonment. हाँ, तुम मुझसे प्यार करो, हर दुम तर्क. And for this great sin of abandonment, I confess. और तर्क करने के उस अजीम गिना के लिए मैं एतराफ करता हूँ. The house was shrouded in the sadness of abandonment. घर तर्क होने के गम में कफन था. Randolph would be taunted with his abandonment of Mr. रेंडोलिव को मुस्टर के तर्क करने पर तंज किया जाएगा. How could I survive another abandonment? As I pondered. मैं एक और तर्क करने से कैसे बच सकता हूँ, जैसे मैंने गौर किया. It came as a shock, this abandonment of your studies. ये एक झटके की तरह आया, ये आपकी तालीम को तर्क करना है. So it has to be felt with the acts of total abandonment. तो इसे मुकम्मल तर्क करने की कलहाड़ी से बांधना पड़ता है. Her mother is devastated and embittered by the abandonment. उसकी वालिदा बर्बाद होकर रह गई हैं. In the abeyance of the. के गायब में. The mind should be normally in abeyance.
दिमाग आमतौर पर गायब होना चाहिए. Time was in abeyance on the ship's clocks. जहाज की घड़ियों पर वक्त गायब था. The spirituality aspect is still in abeyance. रूहानियत का पहलू अभी भी मुबतला है. There may be such a state as the abeyance of. उस तरह की हालत हो सकती है जिसकी परहेजी. The forest law fell into abeyance. जिंगल का कानून गायब हो गया. Your plan is in abeyance. आपका मंसूबा गायब है. The Russian threat is at the least in abeyance. रूसी खतरा कम से कम लापरवाही में है. The rule has been in abeyance since 1980. ये कानून 1980 से गायब है. This custom has fallen into abeyance now. ये रिवाज अब गायब हो गया है. Abide with me a while longer. थोड़ी देर मेरे साथ रहो. I can't abide that man. मैं उस आदमी की पासदारी नहीं कर सकता. How can you abide such a person? आप ऐसे शख्स की किस तरह रह सकते हैं. I can't abide her. मैं उसकी पाबंदी नहीं कर सकता. You shall abide in my love. तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे. He will abide my coming. वो मेरे आने की पाबंदी करेगा. How can you abide him? तुम उसकी पाबंदी कैसे कर सकते हो. They abide in a remote village. वो एक दूर दराज गांवों में मुकीम है. She can't abide his rudeness. वो अपनी बेदर्दी से कायम नहीं रह सकती. We will abide by their decision. हम उनके फैसले की पासदारी करेंगे. I really trust his ability. मुझे वाक़ईता हिज उसकी काबिलियत पर एतमाद है. I have many abilities. मुझ में बहुत सी सलाहियतें हैं. He is a man of ability. वो काबिलियत वाला आदमी है. I believe in my abilities. मुझे अपनी सलाहियतों पर यकीन है. She has psychic abilities. वो नफ्सियाती काबिलियत रखती है. Tom has psychic abilities. टॉम की नफ्सियाती सलाहियतें हैं. He is a man of great ability. वो बड़ी काबिलियत का आदमी है. I think he's a man of ability. मेरे ख्याल में वो काबिलियत का आदमी है. I trust his executive ability. मुझे उनकी इंतजामी सलाहियत पर एतमाद है. This job is beyond my ability. ये काम मेरी काबिलियत से परे है. He is a man of greater ability. वो एक काबिलियत का आदमी है. He is a man of greater ability. वो एक काबिलियत का आदमी है. Her ability took her to the top. उसकी काबिलियत इसे सबसे ऊपर ले गई. The girl lacked musical ability. लड़की में मौसीकी की काबिलियत का फकदान था. He has confidence in his ability. इसे अपनी सलाहियत पर एतमाद है. This is the extent of my ability. ये मेरी अहलियत की हद है. I completely trust your abilities. मुझे आपकी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है. I doubt his ability to do the job. मुझे उसकी नवक्री करने की सलाहियत पर शक है. I don't doubt his ability to do it. मुझे उसकी सलाहियतों पर शक नहीं है.
John has confidence in his ability. जॉन को अपनी सलाहियत पर एतमाद है. We cannot overestimate her ability. हम उसकी काबिलियत को ज्यादा नहीं समझ सकते हैं. You can rely on his proven ability. आप उसकी साबितशुदा सलाहियत पर भरोसा कर सकते हैं. You can rely on his proven ability. आप उसकी साबितशुदा सलाहियत पर भरोसा कर सकते हैं. There is no doubt about his ability. उसकी काबिलियत के बारे में कोई शक नहीं है. He has an unusual ability in English. उसकी अंग्रेजी में गैर मामूली सलाहियत है. The question of Tom's ability came up. टॉम की अहलियत का सवाल सामने आया. Do you have a supernatural abilities? क्या आपके पास कोई माफौक अलफितरत काबिलियत है? He had a high opinion of her abilities. इसे अपनी सलाहियतों के बारे में अल्ली राय थी. He has the ability to make a good plan. वो एक अच्छी मंसूबा बंदी करने की सलाहियत रखता है. I have complete faith in his abilities. मुझे उसकी काबिलियत पर मुकम्मल एतमाद है. I have every confidence in his ability. मुझे उसकी काबिलियत पर पूरा एतमाद है. I don't want to have children. Is that abnormal? मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहता. क्या ये गैर मामूली है? It is abnormal to eat so much. इतना खाना गैर मामूली है. Her behavior is abnormal for a young girl. नवजवान लड़की के साथ उसका सलूक गैर मामूली है. This warm weather is abnormal for February. ये गर्म मौसम फरवरी के लिए गैर मामूली है. We have detected an abnormality on your X-ray. हमें आपके एक्सरे में गैर मामूली चीज का पता चला है. It is abnormal to have the heart on the right side. दाएं तरफ का दिल होना गैर मामूली है. What does said is abnormal? क्या कहा गैर मामूली है? In men, it may cause abnormal. मर्दों में ये गैर मामूली सबब बन सकता है. In men, it increases the abnormal. मर्दों में ये गैर मामूली बढ़ाता है. The abnormal replication of cells is. खलियों की गैर मामूली नकल है. All aboard. सब सवार. Come aboard. सवार हो जाओ. I went aboard. मैं सवार हो गया. I'm going aboard. मैं जहाज पर जा रहा हूँ. May I come aboard? क्या मैं सवार हो सकता हूँ? Is Tom still aboard? क्या टॉम अभी सवार है? Is Tom still aboard? क्या टॉम अभी सवार है? Let Tom come aboard. टॉम को सवार होने दो. Is Tom aboard that ship? क्या टॉम उस जहाज पर सवार है? He's now aboard the ship. अब वो जहाज पर सवार है. We went aboard the plane. हम जहाज में सवार हो गए. Are all the passengers aboard? क्या सारे मुसाफिर सवार हैं? I'd like to welcome you all aboard. मैं आप सबको सवार करना चाहता हूँ. I slept aboard the ship. मैं जहाज पर सो गया. He went aboard the plane. वो जहाज में सवार हो गया. Did you see Tom go aboard? क्या आपने टॉम को सवार होते देखा?
They went aboard the plane. वो जहाज पर सवार हो गए. They are now aboard the ship. अब वो जहाज पर सवार हैं. 48 sailors are aboard. 48 मुलाह सवार हैं. All of us climbed aboard quickly. हम सब तेजी से जहाज पर चढ़ गए. The president abolished slavery. सदर ने गुलामी खत्म कर दी. I will abolish capital punishment. मैं सजाए मौत खत्म कर दूंगा. We must abolish the death penalty. हमें सजाए मौत को खत्म करना होगा. This evil custom must be abolished. उस शैतान के रिवाज को खत्म किया जाना चाहिए. The president has abolished slavery. सदर ने गुलामी खत्म कर दी है. We should abolish the death penalty. हमें सजाए मौत को खत्म करना चाहिए. He wished to control, not to abolish them. उसने ख्वाहिश की कि वो काबू पाए, उनको खत्म न करे. To abolish this kind of bad evil. उस तरह की बुराई को खत्म करो. Many teachers wish to abolish the cane. बहुत सारे इसातिज़ा केबन को खत्म करना चाहते हैं. The death penalty should be abolished. सजाए मौत खत्म कर दी जानी चाहिए. He was not an abolitionist. वो मनसूख नहीं था. They declared for the abolition of slavery. उन्होंने गुलामी के खात्मे का ऐलान किया. British Union for the abolition of vivisection. ब्रिटिश यूनियन बराए खात्मे के लिए. The abolition of private ownership of land and application. जमीन और दरख्वास्त की निजी मलकीत का खात्मा. The abolition of slavery. गुलामी का खात्मा. He fought for abolition of the death penalty in Britain. उन्होंने बर्तानिया में सजाए मौत के खात्मे के लिए जिद्दोजहद की. We advocate the abolition of all nuclear weapons. हम तमाम जौहरी हथियारों के खात्मे की वकालत करते हैं. The ending of a law, a system or an institution. किसी कानून, निज़ाम या किसी इदारे का खात्मा. The abolition of apartheid, the death penalty. रंग इम्तियाज का खात्मा, सजाए मौत. The abolition of apartheid, the death penalty. It demanded the abolition of the family code. उसमें खानदानी ज़ाबता के खात्मे का मतालिबा किया गया. The slaves got freedom after the abolition of slavery. गुलामी के खात्मे के बाद गुलामों को आज़ादी मिली. The abolition of the transfer system is inevitable. मंतकली के निज़ाम का खात्मा नागज़ीर है. Sadly, because of abolition, it was also the last. अफसोस की बात यह है कि खात्मे की वजह से ये भी आखिरी था. The abolition of car tax is a good idea. कार टैक्स का खात्मा एक अच्छा ख्याल है. What's the abbreviation for saint? सेनेट का मुख्फिफ क्या है? SHAP is an abbreviation of. शाप का मुख्फिफ है. CLS is an abbreviation for clear screen. CLS वाज स्क्रीन का मुख्फिफ है. This abbreviation had been adopted in the convent. ये मुख्फिफ कन्वेंट में अपनाया गया था. As an abbreviation, his companions called him Bossuet. मुखातब होने के नाते उसके साथियों ने इसे बोस्यूट कहा. But I think it's an abbreviation of DYDD Mercher.
लेकिन मुझे लगता है कि ये डाइड मर्डर का मुख्फिफ है। He gave an abbreviated wave. उसने एक मख्तसर लहर दी। UK is the abbreviation for the United Kingdom. बर्तनिया का मख्तसरा बर्तनिया है। Doc is an abbreviation of doctor. डॉक्टर डॉक्टर का मुख्फिफ है। What is this the abbreviation for? उसका मुख्फिफ क्या है?